So students, in this video I am going to take this Gomori's cutting plane method. So what is Gomori's cutting plane method? To understand this method, let us take the example first. Fine. So here we have this problem, a two variable problem. Maximum z is c1x1 plus c2x2 subjected to a11x1 plus a12x2 less than equal to b1, a22x2 plus a22x2 is less than equal to b2. Here x1 x2 is greater than equals to 0 and integers. Fine. So in this problem, first write down the problem into standard form. So we have this problem in this standard form. So in standard form, problem is this maximum z is equals to c1x1 plus c2x2 subjected to a11x1 plus a12x2 plus x3 is equals to b1. Fine. Slack variable, another slack variable is a22x2 plus a22x2 plus some x4 is b2, and here x1 x2 x3 x4 all are greater than equals to 0. Here we have ignored the integer restriction, so ignored the integer restrictions. Finally, we have not considered that x1 x2 are integer solution. We have ignored this part and we will solve the problem. Fine. So what will be the initial table? Initial table is this. This is the basis, then value, then x1 x2 x3 x4. Here is a11 a12 then 1 0 and value is b1, basis is x3 and x4. Here is b2 a22 a21, this is 21, a22 and 01. In the right hand side, in the objective function, we have minus c1 minus c2 0 0 and z. Sorry, this is 0. So this is the initial table. Fine. Now this is the initial table. After doing all the calculation, suppose we have this is the final table. This is the optimum table. Fine. So applying the algorithm, simplex method, we get this table. Fine. Here x2 and x3 are the basic variables and the value of x2 is y10, x3 is y20. So they are the new values. This is the final optimum table. This is ये initial table है, ये final table है. Fine. Now here x2 is y10, x3 is y20. अगर ये दोनों इंटीजर आ जाते हैं, then our solution is बेसिकली एन इंटीजर सॉल्यूशन. अगर ये इंटीजर की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा इंटीजर रिस्ट्रिक्शन को भी और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. बट सपोज दिस इज नॉट, दीज आर नॉट इंटीजर्स, y10 is not an integer, then this is not an integer solution. Fine. Then how to deal this problem? Then in this case we need Gomori's constraint. एक constraint हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, that is called as Gomori's constraint. Then how to develop the Gomori's constraint? Fine. So to develop the Gomori's constraint, first consider this equation because y10 is not an integer. तो y10 क्योंकि इंटीजर नहीं है इसलिए हम इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, x2 इक्वेशन के बारे में. व्हाट विल बी द x2 इक्वेशन? फ्रॉम दिस टेबल x2 इक्वेशन कैन बी रिटन एज y11 x1 y11 x1 प्लस y12 x2 y12 x2 प्लस y13 x3 y13 x3 plus y14 x4 is equals to the right hand side is y10. Fine. So this is the x2 equation, x2 row, this is the x2 row. Fine. So now we will use this x2 row. So this is the x2 row, this is the x2. So let in this optimal solution x2 is not an integer solution.
which is required to be an integer. So write x2 row as follows. This is the x2 row. Fine. Now according to this table, if you will see, x2 is a basic variable. तो इसका मतलब यहाँ 1 रहा होगा, यहाँ 0 रहा होगा. y1 2 is 1 and y2 2 is 0 and y0 2 is also 0. Similarly x3 is a basic variable. तो ये basic variable है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्वांटिटी y23 की वैल्यू 1 रही होगी, ये y13 0 रहा होगा, y03 is also 0. So here from the table x2 and x3 are basic variables. So y12 is 1, y22 is 0, y13 is 0, y23 is 0. Fine. So now put this value here. So what we will get? y11 x1, y10 is equal to y11 x1 plus y12 is 1. So this will be only x2 plus y13 is 0. So this will be 0 plus y14 x4. Fine. So y14 x4. This is a product. This is product. So we get this. Now y10 is positive because solution आया होगा तो ये positive value रही होगी. So this is positive. Now express y10, this coefficient y11 and y14 as an integer part plus a non-negative fractional part. Fine. For example, let's say y10 is say 3.75. मान लिया ये हमारी वैल्यू है. So this can be rewritten as 3 plus 0.75. This is the integer part plus non-negative fractional part. Fine. तो इसको यही लिखा गया है, integer part plus non-negative fractional part. But suppose y10 is say minus 3.75. So how to deal this problem? This can be written as 4 plus 0.25 minus 4 plus 0.25. So this is the integer part and this is the fractional part. Non-negative fractional part. ये नॉन निगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए. ये निगेटिव हो सकता है, बट दिस शुड बी अ नॉन निगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट. फाइन. So we have taken the positive case, we have taken the negative case. Both these cases we have taken. Fine. So let us see. So this is denoted by, this part is denoted by I, this is denoted by F. Fractional part, integer part. Fine. So here is this. So y10 is denoted by integer plus fractional part. Then this, so this integer part plus fractional part, this y10 is y10 को integer plus fractional part. Similarly y11 is integer plus fractional part multiply by x1 plus x2 plus y14 integer plus fractional part x4. Fine. अब जितने भी fractional part हैं y1 f of 10, f of 11 x1 and f of 14 x4 इनको लेफ्ट में ले गए, और जो इंटीजर पार्ट है i10 i11 x1 प्लस x2 प्लस i14 x4 इनको राइट में ले गए. सो दीज आर द इंटीजर पार्ट एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट. फाइन. सो हियर in this case is y1j is i1j plus f of, this is the integer part, this is the fractional part. Fine. Now from this part you will see that this is the fractional part, this is the integer part. Fine. So let f of 10 minus f of 11 x1 minus f of 14 x4, that means this part is suppose h, इसकी वैल्यू मान लिया हमने h है. फाइन. क्योंकि ये सारे के सारे नॉन निगेटिव थे फ्रैक्शनल पार्ट, so this value will be this value is suppose h, suppose this value is h which is greater than 0. मान लिया इसकी वैल्यू जो आती है वो h है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि सभी इंटीजर हैं, फ्रैक्शनल पार्ट है. हमारा टारगेट है इसकी वैल्यू को इंटीजर लाना, बिकॉज इन द राइट हैंड साइड वी हैव इंटीजर्स, तो लेफ्ट में भी इंटीजर होंगे. तो मान लिया इसकी वैल्यू h आती है जो कि एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है. फाइन. सो देन f of 10 विल बी वॉट, इसको हम, इस पार्ट को हम राइट में ले गए h प्लस f of 11 x1 प्लस f of 14 x4. फाइन.
So if this part is obviously greater than 1 because h is an integer which is greater than 0, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू h की क्या होगी 1. इंटीजर है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली h की वैल्यू 1 होगी. सो दिस विल बी 1 प्लस, तो मिनिमम वैल्यू इधर जो आएगी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1. बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज f ऑफ 1 0 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट. क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, इन बिटवीन 0 एंड 1 होनी चाहिए. सो सिंस f ऑफ 1 0 इज फ्रैक्शनल पार्ट, so this cannot be greater than 1. So our assumption is wrong. That means this is not greater than 0. That means this part is less than equal to 0. इसका मतलब ये part greater than 0 नहीं होगा बल्कि less than equal to 0 होगा. Fine. So ये less than equal to 0 है. So this can be rewritten as further minus f of 1 1 x1 minus f of 1 4 x4 is less than equal to minus f of 1 0. And this is actually the Gomori's constraint. दिस इज एक्चुअली द गोमोरीज कंस्टेंट. तो गोमोरीज कंस्टेंट में हम फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शंस का इस्तेमाल, एंड दिस विल कंस्टिट्यूट द गोमोरीज कंस्टेंट. फिर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे इन द टेबल, हियर इन दिस टेबल. सो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू ऐड अ स्लैक वेरिएबल हियर, सपोज x5. सो x5 इज एडेड हियर. नाउ वी हैव न्यू कंस्टेंट एंड देन दिस कंस्टेंट इज एडेड इन दिस टेबल. दिस इज द ओल्ड टेबल, ऑप्टिमम टेबल. अब इसमें एक कॉलम और एक रो और ऐड हो जाएगी. सो दिस विल बी द एडेड हियर x5 माइनस f ऑफ 1 0 माइनस f ऑफ 1 1 0 0 माइनस f ऑफ 1 4 1. तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा x5, जैसे सेंसिटिविटी में किया था, एक नया कंस्टेंट इसमें ऐड हो गया. एंड देन अप्लाई डुअल सिंप्लेक्स मेथड. फिर इसमें हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे एंड देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन. अगर ये फिर हमारा इंटीजर सॉल्यूशन आ गया तो वी विल, हमारा सॉल्यूशन आ गया. अदर नहीं, अगर सारे इंटीजर्स नहीं आए हैं, अगेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द गोमोरीज कंस्टेंट, जिसका जो भी नॉन इंटीजर होगा उसके लिए फिर गोमोरी कंस्टेंट बनाएंगे, फिर दोबारा से इसमें ऐड करेंगे एंड दिस विल बी द प्रोसीजर. फाइन. सो नाउ द एल्गोरिथम इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन फाइनली वी विल टेक एग्जाम्पल. थैंक यू.